नमस्कार मु आपन को स्वागत करुछि अड्डा 24/7 ओपीएससी चैनल रे आशा करुछि आपण माने सब भल रे थिबे एंड काली क्लास टी थिला क्लास काली जेहेतु साइक्लोन पई हमें ताको रीशेड्यूल करथिलो आज 9टा समय रे तो सेम टाइम तो जो माने ऑनलाइन अछंती प्लीज मु रिक्वेस्ट करबी जहाँ सहित आपने शेयर करने कथा कर सो दैट वी कैन स्टार्ट आवर क्लास देखो इकोनॉमी सेगमेंट रो मंजिल सीरीज रे जदि आपण देखिबे ऑलमोस्ट सब टॉपिक्स गुडी को आमे कवर करिछु बट वर्तमान आमे नेक्स्ट जतिक दिन समय अछि जोटा कि टेंटेटिव डेट आपण माने देखिथिबे 1 डिसेंबर बोली कोहा जाउछि प्रीलिम्स रो बिकॉज द नोटिस व्हिच हैज बीन गिवन टू द डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स कलेक्टर्स तो सेटा सर्कुलेट होउची सो वी आर एक्सपेक्टिंग द सेम डेट फॉर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन गुड मॉर्निंग रश्मिता सो वी आर एक्सपेक्टिंग द सेम डेट तनु जति कि समय हम पाखे अछि ऑलमोस्ट आपण कहि परिबे जस्ट मोर देन 1 मंथ सो 1 मंथ भीतर हम चेष्टा करिबा जते भी नेक्स्ट सेशंस गुडी को हबो विल हैव दोस मिक्स ऑफ क्वेश्चंस इन द सेंस कि जंदी देखिए बेस्ट 50 क्वेश्चन सो ऑब्वियसली इट इंक्लूड्स करंट अफेयर्स ही पारे स्टार्टिंग पोर्शन ही पारे को गोटे पर्टिकुलर बैंकिंग ग्रुप ही पारे तेणु मिक्स ऑफ क्वेश्चंस डिस्कस करबा ए काइंड ऑफ ए कंप्रिहेंसिव वन ठीक अछि तो रैंडम कारण रिवीजन करिवार अछि तो ऑब्वियसली गोटे गोटे टॉपिक ऑलरेडी हमें कवर करिचे तो या माध्यम रे रिवीजन करबा पई चेष्टा करबा ठीक अछि चलंतु स्टार्ट करबा आज रो सेशन एंड आज रो एजेंडा देखिबा फर्स्ट होची मोटिवेशनल कोट मोटिवेशन निहाती दरकार टॉपर्स मान वीडियो देखिए आप मोटिवेट होउथबे तो लाइफ इज लाइक राइडिंग ए बाइसाइकिल टू कीप योर बैलेंस यू मस्ट कीप मूविंग अल्बर्ट आइंस्टाइन फेमस साइंटिस्ट आप जानी तो ऑब्वियसली से कहते कि लाइफ इज लाइक ए राइडिंग बाइसाइकिल साइकिल जिते आप चलाउछंती आप जदि कोठी माने रहिले जोठी स्टैटिक पोस्चर रे रहिले तो ऑब्वियसली आपन को गोड़ तले लगाइबा ही पड़िबो या यू हैव टू टेक ए सपोर्ट बट जदि मूव करूछन तो यू कीप मूविंग आपन को ऑटोमेटिकली से बैलेंस हे कि चलथिबो तो सेत पे से कहउछन जदि आपन लाइफ बैलेंस लाइफ हो लाइक ए साइकिल तेणु बैलेंस करबा पई आपन को कीप मूविंग इन द सेंस कि आपन यदि गोटे जगह रे कोडी स्टैग्नेंट हे गले ऑब्वियसली आपनकर बैलेंस डिफिकल्ट हो राइट तेणु से आपन को मूव करबा को पड़िबो कंटिन्यूअसली मूव करबा को पड़िबो तेणु पुराना कथा को छाड़ी की नुवा कथा स्टार्ट करबा को पड़िबो पुराना कथा को पुराना फेलियर को भूली की नुवा सक्सेस स्टोरी पई आपन को प्लान करबा को पड़िबो सबुर महत्व होची ये पर्टिकुलर सेगमेंट रे अछि तेणु जदि आपन रही गले कि नाही मोर लास्ट ईयर हेई नथिला मोर प्रीलिम्स हेई नथिला मेंस हेई नथिला इंटरव्यू हेई नथिला तो डेफिनेटली से जगह रे पुणी सही प्रॉब्लम हबो आपन को बैलेंस करि परिबे नाही तेणु कीप मूविंग अल्टीमेटली यार ऑटोमेटिकली इट विल बी बैलेंस्ड ठीक अछि सुबगन साहब आपण 2029 पई एग्जाम प्लान करूछन तो एटा होची 2024 5 वर्ष ता माने आपण वर्तमान मत लागुची मे बी मैट्रिक पास करिथिबे आई होप सो यदि मैट्रिक पास करिसेंती तबे मो मतरे स्लाइटली टिके आपनकर ठीक अछि आपण पढिबे किछि व्यस्त होवार नै बट ता सहित जो से जो त को कहते जो टीनेज रो जो स्टेज ता थाय ना ताकू टिके स्लाइटली आपण एन्जॉय करंतु गोटे 2 वर्ष तापरे ग्रेजुएशन फर्स्ट रो आपण स्टार्ट करि परिबे त व्यस्त होवार नै 5 वर्ष बहुत समय अछि राइट ठीक अछि टुडेस एजेंडा देखिबा इकोनॉमिक्स बेस्ट 50 क्वेश्चन डिस्कस करिबा एंड नेक्स्ट 1 आवर रे विल डिस्कस दैट चलो स्टार्ट करियो फर्स्ट क्वेश्चन देखंदो इजी क्वेश्चन बट क्वाइट ट्रिकी व्हिच आर द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विल रिक्वायर मैंडेटरी बीआईएस सर्टिफिकेशन आपण माने जानि छंदी बीआईएस सर्टिफिकेशन बीआईएस सर्टिफिकेशन कोन जो पर्टिकुलरली आपण देखिथिबे से जो स्टार मार्क रुए एनर्जी एफिशिएंसी स्टार मार्क राइट स्टार मार्क एनर्जी एफिशिएंसी बीआईएस ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जानते
प्लस आपण देखिथिबे पर्टिकुलरली जो इलेक्ट्रोनिक अप्लायंसेस गुड़ारे तो कोठी से प्रश्न पचारुछि कि को कंपोनेंट रे को अप्लायंसेस रे एटा होछि मैंडेटरी स्टेनलेस स्टील कुकवेयर and then ceiling fan and then aluminum utensils नहीं BI standard हाँ BI standard wooden furniture so obviously wooden furniture तो नुहे जो BIS standard Bureau of Indian Standard वाला एक्चुअली जो स्टार मार्क मु कहथले सेटा होची ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी बी द्वारा जो स्टार दिए एनर्जी एफिशिएंसी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड होची आपनकर जो सर्टिफाई करे द क्वालिटी कंटेंट सर्टिफाई करे तो स्लाइटली टिके एटा को क्लियर करिवे आपन कंफ्यूजन बीआईएस सर्टिफिकेशन होची जो क्वालिटी ऑफ स्टैंडर्ड को क्लियर करे आउ जोटा स्टार मार्क मु कहथले सेटा बी ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी गोटे स्टार 2 स्टार से सब इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस रे आसे ठीक अछि तो बीआईएस जो अच्छी बीआईएस सर्टिफिकेशन कोठी मैंडेटरी थाए स्टेनलेस स्टील कुकवेयर आपण कहिबे सीलिंग फैन कहिबे एवं एल्युमिनियम यूटेंसिल्स कहिबे वुडन रे आसे नाही वुडन फर्नीचर रे आसे नाही सो आंसर होची आपनकर 1 2 3 आपण इजीली कहि परिबे 1 2 3 राइट तो से टाइप रो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी टाइप रो क्वेश्चन गोटे यूपीएस रे एक्चुअली आस्थिला आपण जदी देखिथिबे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर को ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी कोठी को अप्लायंसेस रे से जो स्टार वाला थाए आपण देखिथिबे स्टार मार्क वाला ना तो कोठी 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार एम थाए तो जते एनर्जी एफिशिएंसी सेते तार प्राइस हायर थाए राइट तो सेति पई एटा को दिया जाय था नेक्स्ट देखिबा हम नेक्स्ट स्टेटमेंट Consider the following statements regarding Bureau of Indian Standard, BIS. BIS was initially established under the BIS Act 2016, यानी कि Bureau of Indian Standard Act 2016. The president of BIS is the Minister of Consumer Affairs, Food and Public Distribution. Third, BIS is responsible for hallmarking gold and silver jewelry in India. Answer करंदु. BIS first से पचारुछि कोन BIS was initially established under the BIS Act 2016. BIS Act 2016. आंसर करिवे इनिशियली एस्टाब्लिश्ड देखो तो इनिशियली 16 रे गोटे एक्ट अणा जाइथिला अमेंडमेंट एक्ट अणा जाइथिला स्लाइटली चेंजेस करा जाइथिला बट इनिशियली जते आपण देखिबे एटा को 1986 रे अणा जाइथिला फॉर द फर्स्ट टाइम प्रथम थरो पई 1986 रे आस्थिला ठीक अछि जते 1986 रे आस्थिला सो फर्स्ट यू कैन एलिमिनेट ए एंड बी सो यू हैव ऑप्शन लाइक 2 and 3 and 2 only त माने सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन कंज्यूमर अफेयर जो मिनिस्टर से होचंदी प्रेसिडेंट राइट BIS is responsible for hallmarking gold and silver jewelry in India. Correct or incorrect? Obviously, answer is correct. कारण hallmarking जो करा जाए gold and silver रे आपण देखिथिबे BIS hallmark बोली कहंदी राइट तो आंसर होची कोन ना 2 1 3 शुभकांत देखंतु आपण +2 साइंस कंप्लीट हेछि तो ठीक अछि त माने आपण बखरे और 3 वर्ष अछि आराम से आपण एनसीईआरटीज रो स्टार्ट करंतु बेसिक्स गुडी को ठीक अछि धीरे धीरे एनसीईआरटी कवर कला पारे तापर आपण जो कोर एरियाज रो जो रेफरेंस बुक गुडी को अछि इंडियन पॉलिटी ज्योग्राफी ए सब जिंस को धीरे धीरे आपण स्टार्ट करि परिबे ठीक अछि
स्टार्ट करि परिबे आपण आंसर होची बी नेक्स्ट देखिबा Consider the following statements regarding regulation of the startup ecosystem in India. Startup ecosystem in India विषय रेफरेंस रे हमें देखिबा किछि स्टेटमेंट फर्स्ट होची startups receive operational and compliance relaxation under the Companies Act 2013 तमने Companies Act 2013 रे किछि रिलैक्सेशन दिया जाए स्टार्टअप इकोसिस्टम को एनकरेज करिवा पय से फर्स्ट जिंस कहूची receive operational and compliance relaxation. Second, RBI has established a dedicated helpline to assist startup with cross-border transaction. Assist startup with cross-border transactions. Cross-border transactions in the sense कि जदि आपण किछि जो स्टार्टअप गुडी को अछन से माने फॉरेन कंट्री सहित किछि यदि डील करंती पर्टिकुलरली जो आपण जानिथिबे फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट फेमा जोटा को रेगुलेट करे आरबीआई ता माध्यम रे किछि रिलैक्सेशन दिया जाई छी से कुछ सेकंड स्टेटमेंट थर्ड स्टेटमेंट कोन कहूची मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स प्रोवाइड्स सब्सिडीज टू स्टार्टअप लिस्टेड इन द इंडियन स्टॉक एक्सचेंज आंसर करंतु तीनोटी स्टेटमेंट पढ़ला पर आपन को स्लाइटली आपन जानि परथबे कोटा ऑब्वियस भूल अछि गोटे स्टेटमेंट ऑब्वियस इन द सेंस कि नेसेसरली सेटा भूल होइथिबो एवं दुईटी स्टेटमेंट करेक्ट हेइथिबो को दुईटा ठीक हेइथिबो को गोटे भूल हेइथिबो कोहंतु आपण स्टेटमेंट पढ़ी कि आपण सेंस करि परथुबे जदी स्टार्टअप इकोसिस्टम विषय आपण टिके जानिथिबे जस्ट के आईडिया भी थिबो यू कैन सेंस दिस क्वेश्चन देखुन से कहूची लिस्टेड इन द इंडियन स्टॉक एक्सचेंज कोन फर्स्ट थिंग स्टार्टअप गुडी को इते इजिली तो लिस्टेड हुए नहीं जदी लिस्टेड हेइथिबो डेफिनेटली सेटा गोटे बड़ कंपनी इधर जो हमरो कोन ना बिलियन कंपनी से ऑलरेडी हेइथिबो राइट तेनु फर्स्ट जिंस तेनु से जो कहूची मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स प्रोवाइड सब्सिडीज टू स्टार्टअप्स लिस्टेड ऑन द इंडियन स्टॉक एक्सचेंज तो ऑब्वियसली ये स्टेटमेंट तो नु है थर्ड स्टेटमेंट को आपण इजीली एठी एलिमिनेट करि परिबे जदी एलिमिनेट करछन आपण पाखे रहूची 1 एंड 2 स्टार्टअप रिसीव ऑपरेशनल कॉम्प्लायंस रिलैक्सेशन आपण जानिथिबे से टैक्सेशन रिलेटेड हो किंबा जो आपणकर सपोज को स्टार्टअप जदी किछि रॉ मटेरियल जिनसे परचेस करूची तक सब्सिडीज दिया जाउछे एबे देखतेबे आपण प्रोडक्शन इंसेंटिव जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम अछि तार मेन पर्पस कोन सब्सिडाइजिंग दोस कंपनीज ठीक अछि सेकंड आपण सेम देखिबे आरबीआई हैज असिस्टेड ए डेडिकेटेड हेल्पलाइन टू असिस्ट स्टार्टअप रिलेटेड जदि सेमानकर किछि कंफ्यूजन थाए जहां भी तांकर इनिशियल प्रॉब्लम गुडी को थाए ताकू सॉल्यूशन करबा पई सेटअप करा जाय छै आंसर होची ऑब्वियसली ए 1 and 2 ठीक अछि नेक्स्ट अंडर व्हिच एक्ट डू स्टार्टअप्स इन इंडिया रिसीव ऑपरेशनल रिलैक्सेशन आंसर करंदु स्टार्टअप्स मानंकु को पर्टिकुलर एक्ट थ्रू रे ऑपरेशनल रिलैक्सेशन दिया जाय छै कंपनीज एक्ट 2013 जदि आपण गोटे कंपनी स्टार्ट करूचंदी से स्टार्टअप हो ऑब्वियसली इनिशियल स्टेज रे तक स्टार्टअप ही कहबा तो ऑब्वियसली कंपनीज एक्ट 2013 अनुसार आपण को स्लाइटली रिलैक्सेशन दिया जिवो सो दैट स्टार्टअप ग्रो करिवो राइट बिजनेस को ग्रो करिवा पई जहां भी सपोर्ट सिस्टम दरकार ता प्रोवाइड करा जाउची कंपनीज एक्ट 2013 सी होची आपनकर करेक्ट आंसर ठीक अछि नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन देखंदु ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स नेक्स्ट क्वेश्चन होची ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स को पब्लिश एनुअली कहा द्वारा को पब्लिश होची ता माने जॉइंटली पब्लिश होची को पब्लिश माने जॉइंटली पब्लिश होची फर्स्ट देखंतु कॉर्नेल यूनिवर्सिटी सेकंड इनसीड बिजनेस स्कूल थर्ड मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फोर्थ वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन कहा द्वारा पब्लिश होची आंसर करंतु पढ़िथिबे एटा काफी टाइम पढ़िथिबे यस कॉर्नेल यूनिवर्सिटी नंबर 1 सेकंड इनसीड बिजनेस स्कूल एंड थर्ड होची
वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन तीनोटी संस्था आपनकर अछि जो माने कि एटा को पब्लिश करूचंदी वर्ल्ड इनोवेशन इंडेक्स इंडिया रा रैंकिंग केते आंसर करंदो आपण माने इंडिया रा रैंकिंग केते आज पर द लेटेस्ट इनोवेशन इंडेक्स हमें डिस्कस करिथिले इंडिया रा रैंकिंग केते आज पर द लेटेस्ट इनोवेशन इंडेक्स नेक्स्ट देखिबा consider the following statements regarding India's performance को देखिबा in the global innovation index India's performance in the global innovation index first India leads the lower middle income group रे India lead करूची बोली कुहा जाउची ठीक अछि next India has been recognized as an innovation over performer for 13 consecutive years. It key term कौन अछि over performer. Third कौन अछि India's rank in the GII has been declined consistently over the last 5 years. तो last 5 वर्ष भीतर से कौन कहूची has been declined consistently. Decline करिची या improve करिची आंसर कौन दो decline करिची ना improve करिची ऑलरेडी हमें डिस्कस करिचे डिक्लाइन करिचे ना इंप्रूव करिचे वर्तमान रो रैंक केते अछि इंडिया रो कि जानि चंदी नहीं वर्तमान जदि लेटेस्ट आपण देखिबे 39th पोजीशन रे अछि नंबर 1 नंबर 2 ए जो डिक्लाइन नो है इंडिया इज इंक्रीजिंग कंसिस्टेंटली ओवर द लास्ट 5 इयर्स आपण देखिथिबे पीयूष गोयल जो हमरो कॉमर्स मिनिस्टर अछंदी सेटा को ट्वीट करथिले राइट सेटा को ट्वीट करथिले कि इंडिया इज कंसिस्टेंटली इंप्रूविंग इट्स रैंकिंग इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स तो इजीली आपण एठी थर्ड स्टेटमेंट जोटा अछि एटा को आपण एलिमिनेट करि परिबे एलिमिनेट जदि करूचंदी यू हैव टू ऑप्शंस या गोटी ऑप्शन रहउची जोटा कि दुईटी स्टेटमेंट करेक्ट से कहउची लोअर मिडिल इनकम ग्रुप रे इंडिया इज द लीडिंग कंट्री एंड सेकंड होची आपनकर ओवर परफॉर्मर आपण स्टेटस ताको मिली फॉर 13 कंसेक्यूटिव इयर्स राइट 13 कंसेक्यूटिव इयर्स ओवर परफॉर्मर आपण कहि परिबे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन टी देखिबे आपण पढिबे चिंता करके आंसर करिवे व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द आर्म्स लेंथ प्रिंसिपल आंसर करन आर्म्स लेंथ प्रिंसिपल आंसर आर्म्स लेंथ प्रिंसिपल को माने आंसर करि परिवे सी कौन कहूँ to prevent erosion of the tax base and shifting of profits to low tax jurisdiction answer होची correct to prevent erosion of tax base shifting profits to low tax jurisdiction देखो particularly जितोले हमें लाफर कर्व डिस्कस करूथिले आपनकर मने थिबो हायर टैक्स जितोले रहिबो लो टैक्स बेस यानी कि लोअर कलेक्शन होबो एटा में प्रिंसिपल टी को डिस्कस करथिले सेहि पई आपण देखिबे
इट जो ऑप्शंस टी अछि टू प्रिवेंट इरोजन ऑफ द टैक्स बेस कम करने को प्रिवेंट करने को चाहिए आमको जो प्रॉफिट अच्छी ताको को सेगमेंट को शिफ्ट करने को पड़िबो लोअर टैक्स jurisdiction. That means lower will be the tax, higher will be the tax base. Lower will be the tax rate, higher will be the tax base. एटा को मन रखते हुए टैक्स रेट जदि लो होबो हायर टैक्स बेस ठीक अच्छे तो आर्म्स लेंथ प्रिंसिपल होची टू प्रिवेंट इरोजन ऑफ द टैक्स बेस कौन द अमाउंट ऑफ कलेक्शन ऑफ टैक्स हायर द रेट ऑफ टैक्स लोअर इज द टैक्स बेस एटा को मन रखिए लोअर इज द टैक्स रेट हायर इज द टैक्स बेस लाफर कर तेणु से टैक्स बेस कम रु बंचेबा को जाए कंट्री को यानी कि टैक्स बेस जेमती अधिका रहिबो सेपे हमको कौन करबा को पड़िबो टैक्स रेट को लो करबा को पड़िबो लोअर टैक्स jurisdiction ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा which of the following accurately describes the impact of transfer pricing encourage fair trade practices among unrelated entities leads to the balanced tax revenues between countries, allows multinational companies to strategically manage profits across jurisdictions. Answer करंदो. And eliminates the need for tax audit and financial disclosure. Impact of transfer pricing. Transfer pricing माने कौन? के आंसर करि परिबे transfer pricing माने कौन? ट्रांसफर प्राइस सिंपली होची कोन ना सिंपली आपण देखिबे गोटे कंपनी तबले आउ गोटे कंपनी को तार गुड्स एंड सर्विसेज सेल करूची गोटे कंपनी आउ गोटे कंपनी को गुड्स एंड सर्विसेज सेल करूची नंबर 1 इटी सेल कर देले ही ट्रांसफर प्राइसिंग काहे की कहबा एथि पय कहवा जाउची ना जो कंपनी सेल करूची ताको सब्सिडाइज दिया जाउची गोटे सब्सिडाइज्ड कंपनी कारण आपण मन थिबो जेतबेले ट्रांसफर पेमेंट आम डिस्कस करूले नेशनल इनकम रे जोटा आम कहूलु कि गोटे जगार आउ गोटे को शिफ्ट होची जोटा पेमेंट से कौन गुड्स एंड सर्विसेज क्रिएट हो नाही से जगह में ट्रांसफर इनकम या ट्रांसफर पेमेंट बोली डिस्कस करूले तो से ट्रांसफर एठी होची कौन सब्सिडीज सरकार को तरफ दिया जाउची कंपनी को एवं से ताकू सेल करूची सही सब्सिडी दिया जाइथिबा कंपनी अन्य कंपनी को दैट इज द ट्रांसफर प्राइसिंग Now question is transfer pricing रो impact कौन होबो impact होची कौन ना it allows multinational companies to strategically manage profits across jurisdiction right कारण जो स्टार्टअप कल्चर रे आपण देखिबे जेतेबेले गोटे कंपनी को हम सब्सिडाइज दउचे ठीक अछि से चेष्टा कौन करिवो से ऑब्वियसली चेष्टा करिवो कि तार प्रॉफिट को अर्न करबा पई थ्रू डिफरेंट जुरिस्डिक्शन यानी कि डिफरेंट कंट्रीज सेटा होची ट्रांसफर प्राइसिंग आपण कहि परिबे कारण जदि सब्सिडीज नथांदा बोध हुए से कंपनी सेते प्रॉफिट अर्न करि पारि नथांदा काहे कि ना गोटे स्टार्टअप कंपनी न्यू कंपनी मे नॉट बी गेटिंग एनी प्रॉफिट तो चांसेस अछि से जल्दी बंद करके पळेबो सो व्हाट वी हैव टू डू जदि आपण प्रमोशन चाहू जदि या यू आर एनकरेजिंग द स्टार्टअप then obviously we have to give certain types of facilities like transfer pricing और जोटा कि सीधा भाषा रे कहबा को बोले subsidies so that से कंपनी टी ट्रांसफर प्राइसिंग माध्यम रे किछि प्रॉफिट अर्न करबा को चेष्टा करिवो so that to sustain in the market simple जिंस बुझो जिंसटा to sustain in the market ठीक अछि नेक्स्ट
Interesting question gote. Next. Which of the following is a key feature of the Jan Biswas Act 2023? ये Jan Biswas Act related to what की कही परिवे? Jan Biswas. Jan Biswas होउची सिंपल मन रखतांतु. Jan Biswas होउची कोन? ना आपण जानि चंदी जेतोले कंपनीज आपण गोटे स्टार्ट करू चंदी as per the Company Act 2013 you have to compliance all those rules and regulations कि आपण immediately जो आपनकर लेबरर अछंती या जो एम्प्लॉइज माने अछंती तंको immediately फायर करि परिबे नाही. You have to give them this window कि आपण next 2 months र सैलरी नियंतु and then you can leave. कहीं ना आम कंपनी बंद करने को जाऊँ. All those settlements have to be done and you have to file a closure thing with the particular authority. तो ये जदि प्रोसेस जदि आपण न करंती जोटा कि विजय माल्या ये सब जो माने देश छाड़ी की पळी छन एक्जेक्टली दे हैव डन द सेम थिंग. से माने कोनोसी सेटलमेंट करी नाहंती बुझियो जिनसटा. तो काहे कि ई जिंस होउची ना आम देश रे कोन एक्जेक्टली थिला जदि गोटे कंपनी लॉस रे अछि कंपनी चालुनी तो सेटा गोटे क्रिमिनल एक्टिविटीज हिसाब रे देखा जाए. क्रिमिनल एक्टिविटी माने कोन ना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रे सेटा गोटे हिंड्रेंस भाव रे काम करे. पीपल विल नॉट एनकरेज टू सेट अप ए कंपनी so easily. जदि कंपनी फेल करे इफ कंपनी इनकर्स द लॉसेस तबे डेफिनेटली सेटा गोटे क्रिमिनल एक्ट हिसाब रे धरा जीवा. आपनकर कोर्ट रे केस चलिवो. यू विल बी थ्रोन बिहाइंड द बार्स. ई सब जिंस अछि सेहिथि पई कोहा जाउची कि जदि गोटे कंपनी चालुनी लॉस होउची तबे ताको क्रिमिनल एक्टिविटीज रे इंक्लूड करंतु नाही. सेहिथि पई सरकार गोटे आनिले कोन सो दैट बिजनेस कैन बी फ्लोरिश. इट पई मोर एंड मोर पीपल विल कम टू सेट अप कंपनीज एंड मोर बिजनेसेस कैन बी स्टार्ट अप. तो से जो पर्टिकुलरली जो जिनसटा होची कोन ना डीक्रिमिनलाइजिंग दोस एक्ट रे जो प्रोविजन्स अछि सेटा को डीक्रिमिनलाइज करा जाउची. सेटा को गोटे सिविल सूट हिसाब रे आपण कंसीडर करंतु. आपण देखंतु जो सुब्रत रॉय ही वाज इन जेल एंड से मल्ले भी से जेल रे ही आपण देखिबे जेल रे थिले से. तो से जो जेल रे से थिले तो एमते बहुत गुडे कंपनी अछि जोटा चालुनी बंद हे जाउची. तो सेहित पई सरकार आनी के आस्थिले जन विश्वास अमेंडमेंट प्रोविजन एक्ट 2023 जहां माध्यम रे से कोन करथिले डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ 183 प्रोविजन्स अक्रॉस 42 लॉस. डीक्रिमिनलाइजेशन कारण क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इज क्वाइट लीथल राइट. तो सेहित पई कोनोसी कंपनीज केबे भी बिजनेस करिबा पई चाहिबो नाही. तो सेहित पई सेटा को जन विश्वास बोली कोहा जाउची. ठीक अछि. नेक्स्ट देखिबा. देखो ये जिनस आसी पारे कि जन विश्वास अमेंडमेंट एक्ट रो मेन पर्पस कोन थिला. तो जदि भी आसे इजीली आपण ताको आंसर करि परिबे. नेक्स्ट. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन्स वर इंट्रोड्यूस्ड और अमेंडेड बाय द कंपटीशन एक्ट 2023? बाय द कंपटीशन एक्ट 2023 आंसर करिवे. कंपटीशन एक्ट आपण जानिथिबे कंपटीशन कमिशन ऑफ इंडिया अछि आ गोटे कंपटीशन एक्ट अछि. से कंपटीशन एक्ट को 2023 रे अमेंड करा जाई छी राइट. 2023 रे अमेंड करा जाई छी. तबे कोन कोन प्रोविजन्स गुडी को अछि स्लाइटली हमें देखिबा. फर्स्ट देखंदु द डेफिनेशन ऑफ कॉम्बिनेशंस वाज एक्सपैंडेड टू इंक्लूड ट्रांजैक्शंस अबव 2000 crore. The time limit for approval of combinations was reduced to 10 days to 150 days. Decriminalize certain offences such as failure to comply with CCI order. Introduction of a leniency provision for parties implicated in cartel investigation. तो जो जनरली जो कंपटीशन एक्ट को जो अमेंड करा जाइछि सेटा होची फॉर दिस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जोटा हमें कहउथले जन विश्वास बिल हिसाब रे ता ना दिया जाइथिला. तबे चारोटी जाक प्रोविजन्स रे इंक्लूड करा जाइछे अमेंड करिकि चारोटी जाक प्रोविजन्स को इंक्लूड करा जाइछे. फर्स्ट कोन द डेफिनेशन ऑफ कॉम्बिनेशंस वाज एक्सपैंडेड टू इंक्लूड ट्रांजैक्शंस ऑफ अबव 2000 crore. आपण देखितो एतले विस्तारा एयर इंडिया को परचेस कला टाटा विस्तारा सहित से माने मर्ज करिया पई चेष्टा कले. सो से मर्जिंग रो केस ता इमीडिएटली सीसीआई पखु जाइतला कंपटीशन कमिशन ऑफ इंडिया
राइट तेणु से मर्जिंग हो एक्विजिशन हो जहाँ भी कंपटीशन कमिशन ऑफ इंडिया इंडिया रे ताकू जी अच्छी अथॉरिटी से ताकू डील करे से ताकू एग्जामिन करे तेणु आंसर होउचे आपनकर 1 2 3 4 प्योरली करंट अफेयर्स ठीक अछि जदी स्लाइटली किछि आसे देखो एते डिफिकल्ट तो से माने पचारिबेनी बट स्टिल जदी क्वेश्चन आसे सो यू विल बी एबल टू डू एटलीस्ट सबु प्रकार प्रिपरेशन निहाती हबा दरकार कट ऑफ देखिथिबे 48 नंबर जाईची कट ऑफ आई वाज एक्सपेक्टिंग समथिंग अराउंड 70 टू 75 बट गोटे जिनस निहाती करबा दरकार कि गोटे मिनिमम थ्रेशोल्ड जेमती मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स से माने रखुचंदी मेंस पई पीटी पई निहाती दरकार माइनस रे 10 मार्क्स रखी कि जदी आपण प्रीलिम्स क्वालिफाई करी मेंस लिखुचंदी ओबियसली टिके सेठी हमको चिंता करबा को पड़ियो निहाती एनीवे नेक्स्ट Which of the following statements about International Financial Services Center and its regulation is are correct? मतलब आंसर करिवे ये जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अच्छी कोठी अच्छी इंडिया रो एटा इजी क्वेश्चन इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर टी इंडिया रो कोठी अच्छी को स्टेट रे अच्छी खाली स्टेट ना कोन को स्टेट रे अच्छी जदी एतिकी भी आसला क्वेश्चन को स्टेट रे अच्छी प्लीज आंसर को स्टेट रे अच्छी नहीं ठीक अच्छे देखो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर होची रश्मिता आउ टिके चिंता करंतो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज होची जो फाइनेंशियल सर्विसेज गुडिक अच्छी जेमती आमे देखुछु सिंपल एग्जांपल जदी म आपन देबी जेमती स्टॉक मार्केट सेही टाइप रो इंटरनेशनल लेवल रे जेमती आपन जानिथिबे लंडन स्टॉक एक्सचेंज राइट अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज जोटा को आमे कहूछ अमेरिका रे तो से गुडिक होची इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज मार्केट इंडिया रे जो अच्छी से गुडिक इंडिया रो लेट्स से करेक्ट जीता गुजरात गिफ्ट सिटी जोटा हमें कहूचे करेक्ट तो फर्स्ट जोटा अच्छी हेडा गुजरात रे ही हेतिला तो फाइनेंशियल सर्विस सेही टाइप रे गोटे इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर को सेटअप करबा पई करबा पई डिसाइड करा गला राइट नंबर 1 नंबर 2 होची से आईएफसी जोटा मु कहले अपन को गुजरात रे ही सेट ऑफ करा जाईची तो सही विषय रे देखिबा कि इंडियन कंपनीज इन नाउ लिस्ट डायरेक्टली ऑन द आईएफएससी विदाउट बीइंग लिस्टेड ऑन द डोमेस्टिक स्टॉक एक्सचेंज कारण ये कोथि पई हिची इंटरनेशनल लेवल रे ये फाइनेंशियल सर्विसेज रे डिफरेंट कंपनीज गुडी को इन्वेस्ट करि परिबे लाइक द स्टॉक एक्सचेंज तनु देयर इज नो नीड ऑफ कि आपण ताकू एठी रजिस्टर करिबा पूर्वरु आपण इंडियन स्टॉक एक्सचेंज रे रजिस्टर करिबे दैट इज नॉट रिक्वायर्ड सेति पई इंडियन कंपनीज कैन नाउ लिस्ट डायरेक्टली ऑन द आईएफएससी जोटा कि गिफ्ट सिटी बोली कहा जाउची गिफ्ट सिटी होची आपनकर गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल ट्रेड करिकी गिफ्ट सिटी बोली कहा जाउची सेटा गुजरात रे ही फर्स्ट सेट ऑफ करा जाईची ठीक अछि फर्स्ट स्टेटमेंट सेकंड कहूची The International Financial Services Center Authority was established in 2020. आंसर करि परिबे केबे एस्टैब्लिश करा जायतिला 17 रे एक्ट आसिला इस 17 रे गोटे एक्ट होना जायतिला जहां माध्यम रे डिसाइड करा गला कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी सेटअप करा जिवो जोटा कि करा जायतिला 2020 रे ठीक अछि 17 रे आसिला एक्ट सेटअप करा गला 2020 रे थर्ड देखंतु Global depository receipts are traded primarily on the US stock exchange. Answer करि परिबे गोटे होची ADR आ गोटे होची GDR. ADR GDR कोन जेंति एटा ग्लोबल डिपोजिटरी रिसिप्ट सेमति होची गोटे अमेरिकन डिपोजिटरी रिसिप्ट. अमेरिकन डिपोजिटरी रिसिप्ट प्राइमरली ट्रेडेड इन द US स्टॉक एक्सचेंज. ग्लोबल डिपोजिटरी रिसिप्ट होची जेहेतु ना अछि ग्लोबल all over world
ये डिपोजिटरी रिसिप्ट्स कौन सिंपली काइंड ऑफ स्टॉक एक्सचेंज टाइप रो ठीक अछि तो थर्ड स्टेटमेंट होची इनकरेक्ट करेक्ट होची 1 and 2 सो ए इज द करेक्ट आंसर बुझियला जिनसेडा ए इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन Which of the following statements regarding CSR, Corporate Social Responsibility Act 2013? Corporate Social Responsibility माने कौन जदि जो माने जानी नथिबे ता माने होची प्रति कंपनी तार प्रॉफिट र सर्टेन परसेंटेज दे विल स्पेंड फॉर दिस व्हाट सोशल रिस्पांसिबिलिटी आपण देखिथिबे सपोज राउरकेला रे जो स्टील प्लांट अछि स्टील प्लांट तरफ रु स्कूल्स लास्ट रिपीट होची देखो मैं आउ थे कहीदि आईएफएससी जोटा अच्छी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर जोटा अच्छी सेठी इजिली कंपनीज माने रजिस्टर करि परिबे विदाउट गोइंग और विदाउट रजिस्टरिंग इन द डोमेस्टिक स्टॉक एक्सचेंज नंबर 1 नंबर 2 होची 17 रे एक्ट आसीथिला 20 रे एटा को सेट ऑफ करागला थर्ड होची से कहूची ग्लोबल डिपोजिटरी रिसिप्ट्स आर ट्रेडेड प्राइमरली यूएस स्टॉक एक्सचेंज मुझे कहली दुईटी कॉन्सेप्ट अच्छी गोटे अच्छी एडीआर आ गोटे होची जीडीआर एडीआर होची अमेरिकन डिपोजिटरी रिसिप्ट्स जोटा की प्राइमरली ट्रेडेड इन द यूएस स्टॉक एक्सचेंज ग्लोबल जेहेतु अच्छी एटा ऑल ओवर द वर्ल्ड केवल या प्राइमरली यूएस स्टॉक एक्सचेंज नुहे ऑल ओवर द वर्ल्ड ठीक अच्छी नेक्स्ट कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी मुझे एमती कहली आपन को प्रॉफिट र सर्टेन परसेंटेज दे विल स्पेंड इन द सोशल रिस्पांसिबिलिटी मे बी एजुकेशन मे बी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर राइट स्किल डेवलपमेंट लेट्स से दे कैन बिल्ड टॉयलेट्स आल्सो सोशल एस्पेक्ट्स तो सेटा को कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी बोली कहा जाए राइट तो ये होची कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी से तार विषय प्रश्न पचारुची कि सेक्शन 135 ऑफ द कंपनीज एक्ट आउटलाइंस प्रोविजंस रिगार्डिंग सीएसआर यानी कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू स्पेंड ए मिनिमम 5% ऑफ देयर एवरेज नेट प्रॉफिट ऑन सीएसआर एक्टिविटीज नॉन कॉम्प्लायंस विथ सीएसआर प्रोविजन हैज बीन नोटिफाइड एज ए सिविल रॉन्ग सिंस जनवरी 22-21 यार आंसर कहतु आपण माने आंसर करंतु बी बी जदि आंसर तेबे तो आपण कहउछन कि फर्स्ट एंड थर्ड इज करेक्ट सेकंड इज इनकरेक्ट व्हाई सेकंड इज इनकरेक्ट आंसर करिवे कि रश्मिता व्हाई सेकंड इज इनकरेक्ट देखो तो फर्स्ट होची ठीक अछि सेक्शन 135 डील्स विद द प्रोविजंस रिगार्डिंग सीएसआर नंबर 1 थर्ड होची नॉन कॉम्प्लायंस विद सीएसआर प्रोविजन हैज बीन नोटिफाइड एज द सिविल रॉन्ग क्रिमिनल एक्टिविटीज नुहे सिविल सूट आपण को केस रे जारी हेई पारे 2021 रु ठीक अछि सिविल केसेस हबो सेकंड होची ये कुछ जो minimum 5% of their average net profit on CSR activities. It's not 5%, rather 2% of last 3 years average profit. लास्ट 3 वर्ष रो एवरेज प्रॉफिट रो 2% जो अछि सेटा को आपन को स्पेंड करबा को पड़िबो एज द व्हाट वी कॉल द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी हिसाब रे ठीक अछि सो आंसर होजी बी बी करेक्ट अछि बट काहे की करेक्ट सेटा जानिबा नै दरकार व्हाट इज द प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस
आंसर करंतु एटा तो इजी क्वेश्चन एनर्जी सेगमेंट प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस यस मीथेन प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस मीथेन ठीक अछि बी इज द करेक्ट आंसर बी नेक्स्ट देखियो which of the following statements is true regarding the national gas grid in India regarding the national gas grid in India national gas grid देखिबा first statement से कहूची it is a network of pipelines of 33,764 kilometer long 33,764 kilometer long. It connects all major supply and demand centers in the country. It is regulated by the Ministry of Environment and Forest. Answer karantu it. Easy question. Elimination round, elimination technique use karantu and you will get the answer easily. Natural gas grid विषय कहूची को मिनिस्ट्री हेतिबो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम राइट मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम जदि हेतिबो तो ऑब्वियसली एटा को आपण एलिमिनेट करि परिबे यदि एटा को एलिमिनेट करूछंती सो विल गेट दिस वन 1 and 2 फर्स्ट होची कोन ना 33,764 किलोमीटर लॉन्ग and it connects all major supply and demand centers of the country. ठीक अछि नेक्स्ट देखिबा which of the following changes were introduced in the electricity rights to consumer electricity amendment rules 2023 electricity rights of consumer amendment rules 2023 first kochi introduction of time of day tariff second penal charges for consumers based on maximum demand recorded before the installation of smart meter time bound services for the new electricity connections answer करंतु कोन answer करंतु देखो जो 2023 रूल्स अमेंडमेंट रूल्स आसी इंट्रोडक्शन ऑफ टाइम ऑफ डे टैरिफ इन द सेंस कि डिफरेंट आपनकर जो यूनिट्स पाई डिफरेंट प्राइसेस गुडी को थाए या डिफरेंट आपन कहि परिबे जो डिफरेंट रेट्स थाए ऑन द बेसिस ऑफ यूज आपन गोटे सर्टेन परसेंटेज पर्यंत यूज कले गोटे रेट तापरे अबव दैट आ गोटे रेट पड़ो गोटे बोधे 1.5 टंका तापर 3 टंका कि 3.5 टंका एमती इनक्रीज ही चले सेटा को कहा जाउची नंबर 1 सेकंड होची पिनल चार्जेस नाही किछि पिनल चार्जेस कोन कंज्यूमर को ऊपर इंपोज करा जीव नाही टाइम बाउंड सर्विसेज फॉर द न्यू इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन जो सौभाग्य स्कीम आपण जानिथिबे कि फ्री इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन जो प्रोवाइड करा जाउची सेबेटो हम चेष्टा करछु टाइम बाउंड सर्विसेज फॉर न्यू इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस सो आंसर होची आपनकर 1 and 3 एवं एटा को डिजिटलाइज करा जाई छी आपण जानिथिबे ई गवर्नेंस माध्यम रे डिजिटलाइज करा जाई छी आंसर होची ए 1 and 3 नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द पुष्प पोर्टल लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ पावर पुष्प पोर्टल जल्दी जल्दी आंसर करिवे पुष्प पोर्टल रो मेन पर्पस कोन पुष्प पोर्टल रो मेन पर्पस होउची सिंपली मन रखथिबे टू इनश्योर ग्रेटर अवेलेबिलिटी ऑफ पावर ड्यूरिंग द पीक डिमांड सीजन जेमति आपण देखिबे पीक डिमांड सीजन रे सपोज समर रे तोले घरे घरे 2-3टा एसी लागि थिबो से टाइम रे आपण देखिबे वोल्टेज फ्लक्चुएशन काफी हाई हुए
बहुत समय ब्लैकआउट भी हो जाए कोठी बर्न आउट भी हो जाए तो से जिनस गुड़ा को मैनेज करने सरकार स्टार्ट कर पुष्प पोर्टल मन रखिए एटा को पुष्प पोर्टल सो आंसर हूँ B2 ओनली आंसर हूँ B2 ओनली ठीक अच्छे नेक्स्ट देखिए What is the primary objective of the market coupling of power exchange as directed by the Union Ministry of Power? Market coupling of power exchange. आंसर करिवे मिनिस्ट्री ऑफ पावर द्वारा यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पावर द्वारा जो मार्केट कपलिंग ऑफ पावर एक्सचेंज होची से मार्केट कपलिंग ऑफ पावर एक्सचेंज रे मेन ऑब्जेक्टिव कोन ऑब्जेक्टिव होची सिंपली मन रखते टू डिस्कवर ए यूनिफॉर्म मार्केट क्लियरिंग प्राइस अक्रॉस ऑल एक्सचेंजेस to discover uniform market clearing price across all exchanges. So again B is the answer, right? B is the answer. तो particularly जदि आपण देखिबे जो पावर एक्सचेंज आमे करूचे मार्केट क्लियरिंग प्राइस कोट अछि MCP मार्केट क्लियरिंग प्राइस अक्रॉस ऑल एक्सचेंजेस ठीक अछि सेटा होची मार्केट कपलिंग ऑफ पावर एक्सचेंज एटा को स्लाइटली मन रखिबे एटा को करंट अफेयर्स गुडी को तणो पछरी पारे नेक्स्ट देखिबा What recent decision did the Ministry of Power take regarding interstate transmission system charges? Interstate transmission system charges. Answer करंतु इंटरस्टेट जिते गोटे स्टेट रु सपोज ओडिशा को पावर सप्लाई होची गुजरात रु लेट से तो सेटा होची इंटरस्टेट गोटे स्टेट रु आ गोटे को आसुची तो ता ऊपर किछि आपण कहि परिबे चार्जेस इंपोज करा जाए ठीक अछि तो वर्तमान डिसाइड करछन सरकार ये जो इंटरस्टेट ट्रांसमिशन चार्जेस अछि ये चार्जेस को इंपोज करा जीवो नाही काहा ऊपर ऑफशोर विंड ग्रीन एंड अमोनिया प्रोजेक्ट्स फॉर 25 इयर्स ठीक अच्छे ये जो विंड ग्रीन हाइड्रोजन एंड अमोनिया प्रोजेक्ट्स फॉर नेक्स्ट 25 इयर्स कारण जो ग्रीन एनर्जी रो अवेलेबिलिटी या कंजप्शन को बढ़ेवा पई एटा को स्टार्ट करा जाय छी ठीक अछि बी अगेन 2 ओनली इज द करेक्ट आंसर मन रखते बेटा को इंटरस्टेट ट्रांसमिशन चार्जेस उटा लगा जाए कहा ऊपर गोटे स्टेट रो आ गोटे स्टेट को जते बेले इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करा जाय थे पावर सप्लाई करा जाय थे ठीक अछि Next, which entity has been taken with integrating e-commerce platform on the ONDC? ONDC e-commerce platform on the ONDC. Answer करिवे. Easy question. ई-कॉमर्स या ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स बोली ताको हमें कहू कहा सहित एटा को इंटीग्रेट करा जाय छै देखो ई-कॉमर्स कोन ई-कॉमर्स होची आपनकर मिंत्रा मिशो फ्लिपकार्ट ये सब जिनस गुडी को ये होची ई-कॉमर्स भारत बिल पे लिमिटेड सहित टाई ऑफ काहे की होबो एटा गोटे पेमेंट सिस्टम तेणु सेमानकर दे हैव ओन पेमेंट एग्रीगेटर लेट्स से पेमेंट एग्रीगेटर कोन जोटा कि आपण देखिथिबे गोटे गोटे जो जहा थ्रू रे आपण पेमेंट करन गोटे थर्ड पार्टी थिबो ता थ्रू रे आपण पेमेंट कले गोटे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म को पेमेंट जीवो से होचन एग्रीगेटर तेणु भारत बिल पेमेंट लिमिटेड सहित तार संपर्क कोन सेकंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सहित तांकर संपर्क कोन ऑब्वियसली क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया संपर्क अछि काहेकि ना यू हैव टू एंश्योर क्वालिटी फर्स्ट सेकंड यू हैव टू गिव adequate and symmetric information तबन आपण इतले प्रोडक्ट गोटे ऑनलाइन परचेस करूचंदी every detail should be mentioned on that page about that product तार क्वालिटी तार कंटेंट कोन तार को मटेरियल यूज हेची केते ड्यूरेबिलिटी माने पर्टिकुलरली आपण रिप्लेसमेंट अछि ना एक्सचेंज अछि ना सब इन्फॉर्मेशन सेठी देवा को आपण को पड़िबो सेति पे क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया सहित समानकर टाई अप आपण को देखिबा को मिलिबो as tasked with integrating e-commerce platforms on the ONDC
ठीक अच्छे क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एन इंश्योरेंस श्योरिटी बॉन्ड? इंश्योरेंस श्योरिटी बॉन्ड काफी टाइम एटा न्यूज पेपर रे आपण देखिथिबे, इंश्योरेंस श्योरिटी बॉन्ड। इंश्योरेंस श्योरिटी बॉन्ड को मन रखते, सपोज आप गोटे इंश्योरेंस परचेस कर, लेट्स से को कंपनी बिकुला आप गोटे किणी देथिले, से इंश्योरेंस रा प्रिंसिपल अमाउंट आपन को मिलू नाही। आपन जानिथिबे बहुत गुडे प्राइवेट एजेंसी प्राइवेट संस्था अछंती, सेमान कोन करछंती इंश्योरेंस डिस्प्यूट्स को सॉल्व करबा पई से माने करिसंती, माने प्लेटफॉर्म खोली की बसचंती। दे आर चार्जिंग समथिंग एंड दे विल एंश्योर दैट यू विल गेट योर मनी बैक और इंश्योरेंस मनी बैक। कौन पाई ना कंपनी ठकुचंती, कारण किछि ना किछि गोटे क्लॉज मैनिपुलेट या क्लॉज गोटे, कारण आपण गोटे इंश्योरेंस परचेस कले 50-60 पेज रे क्लॉज आसीबो, आपण पाई गोटे क्लॉज तार आसीबो, तार गोटे पर्टिकुलर कंडीशंस गुडिक ऑब्वियसली आपण तक सब पढ़ी परिबे नै, पढ़िबे जदी अधा तो बुझी हबो नै। तो सेहि पई इंश्योरेंस सेफ्टी बॉन्ड गोटे अणा जाउची, सो दैट से इंश्योरेंस श्योरिटी बॉन्ड से इंश्योरेंस को श्योर शॉट आपन को जेमती मिली परिबो, सेत पई इंश्योरेंस श्योरिटी बॉन्ड बोली तो कहा जाउची, टू गारंटी द परफॉर्मेंस और ऑब्लिगेशंस ऑफ ए प्रिंसिपल टू द ऑब्लिजी। ऑब्लिजी होची सिंपली जोटा जे बेनिफिशियरी जे परचेस करथिबो ताको ऑब्लिजी बोली ताको कहा जाय। ठीक अछि, आंसर होची B2 ओनली, इंश्योरेंस श्योरिटी बॉन्ड बोली ताको कहा जाउची। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु, which of the following is not a mandate of the Insurance Regulatory and Development Authority of India, IRDAI? is not mandate in the sense कि ताकू से पावरटी दिया जाए नहीं। फर्स्ट देखो, टू ग्रांट लाइसेंस टू इंश्योरेंस कंपनीज टू रेगुलेट द प्राइसिंग ऑफ ऑल इंश्योरेंस पॉलिसीज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द पॉलिसी होल्डर्स। आंसर करिए, IRDAI जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तार काम कौन? इंश्योरेंस मार्केट को रेगुलेट करवा। तेणु जो कंपनी इंश्योरेंस पाई चाहूची, गोटे कंपनी इंश्योरेंस खोलिबा पाई ऑब्वियसली हैव टू गेट द लाइसेंस। सेकंड होची तार मेन काम कौन, जेमती सेबी रो मेन काम कौन? एक तो लाइसेंस दवा, ऑब्वियसली जे स्टॉक मार्केट जोटा कि लिस्टेड बोली कहूचे। सेकंड जमती सिमेट्रिक इंफॉर्मेशन समस्त मिलू, यानी कि प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर। सिमिलरली IRDAI also ensuring protecting or ensuring the interest of the policy holders, जो माने पॉलिसी परचेस करिवे। प्राइस केते होबो, that is none of the business of IRDAI। तो 1 and 3 स्टेटमेंट होची करेक्ट, और नॉट करेक्ट जेहेतु पचारची ऑब्वियसली B2 ओनली। नेक्स्ट देखो, which of the following statements regarding ports in India is are correct? Port, major ports are under direct administrative control of the central government. Number 1, minor ports are governed by the respective state maritime board. There are 12 government owned major ports in India. एटा आंसर करूँ तो इजी क्वेश्चन एटा। मेजर पोर्ट्स एंड माइनर पोर्ट्स अच्छी। मेजर पोर्ट जमती पारादीप गोटे मेजर पोर्ट, तो एटा डायरेक्टली कहाँ अंडर रहउची? सेंट्रल गवर्नमेंट रो डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी अंडर रहउची। माइनर पोर्ट्स गुडी को ऑब्वियसली स्टेट मैरिटाइम बोर्ड अंडर रहउची, एवं टोटल 12 गवर्नमेंट ओन्ड मेजर पोर्ट्स आपन को देखिबा को मिलिबा इंडिया रे। सेति में आंसर होउची एटा कोन ना D1213। ठीक अछि, नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। Which of the following acts govern the functioning of major ports in India? First देखंतु, Major Port Authorities Act 2001, 13 मेजर पोर्ट अच्छी।
टिके तो क्रॉस चेक कर नियंतु 13 अच्छी या 12 अच्छी 13 थी obviously answer will be wrong. Please cross check that. Which of the following acts govern the functioning of major ports in India? Major ports को act द्वारा डील करा जाउची. फर्स्ट देखंतु Major Port Authorities Act 2021 number 1. Number 2 होची India's Port Act. India's Port Act, right? 1 and 2 only आपण कहि परिबे. दुईटी एक्ट अछि जहा द्वारा पोर्ट को रेगुलेट करा जाउची. दुईटी एक्ट अछि जहा द्वारा पोर्ट को रेगुलेट करा जाउची. नेक्स्ट देखिबा. What is the primary purpose of the Bharat NCAP introduced by Ministry of Road Transport and Highways? Bharat NCAP रो माने कोन? भारत इनकैप रो माने कोन? भारत इनकैप होची जेमती पर्टिकुलरली जो गाड़ी गुडी को क्रैश टेस्ट करा जाय आपण जानि थिबे कार गुडी को लेट से सेफ्टी फीचर को देखिबा पई, सेफ्टी फीचर को देखिबा पई. ठीक अछि. भारत इनकैप करी कोन कोन तार माने प्राइमरी पर्पस कोन? फर्स्ट, to enhance fuel efficiency of vehicle. Second, to assess the safety of vehicles in case of collision. Third, to promote electric vehicles. To standardize vehicle design across manufacturing. NCAP जेतु मु कहली आपन को सेफ्टी फीचर गोटे जिनसे तो आपन को एटु जणा पड़थिबो टू प्रमोट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पाइन तो से नथिबो ताको आपन इजीली एठी एलिमिनेट करि देई पारंदे. टू स्टैंडर्डाइज व्हीकल डिजाइन अक्रॉस मैन्युफैक्चर भाई डिजाइन स्टैंडर्डाइज काहे की सरकार करिवे तो ऑब्वियसली डिजाइन तार कंपनी निजे डिसाइड करिवो. देन आल्सो यू कैन एलिमिनेट दिस. नाउ ऑप्शन इज व्हाट? टू असेस द सेफ्टी ऑफ व्हीकल्स जोटा की ऑब्वियस करेक्ट अछि. दुईटी जाको 2 अछि एवं फर्स्ट से कहूची कोन? टू एनहांस फ्यूल एफिशिएंसी ऑफ व्हीकल. फ्यूल एफिशिएंसी ऑब्वियसली दैट विल नॉट बी डिसाइडेड या सरकार ताको डिसाइड करि पे नाही. तो ऑब्वियसली बी जोटा की सेफ्टी इश्यूज को नेकी भारत एनकैप करी के सेटा को लॉन्च करा जाई छी. ठीक अछि. नेक्स्ट देखिबा. नेक्स्ट देखंतु क्वेश्चन होची which safety device was introduced to prevent trains from colliding with each other? Prevent trains from colliding with each other. आंसर करिवे. इजी क्वेश्चन. मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे बारंबार आसी की इंटरव्यू रे कहउचंदी देखै कि हमें ए पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट को यूज करूछु. स्टिल एक्सीडेंट इज वेरी कॉमन. ठीक अछि. 2 ओनली बी कवच आपण जानि थिबे. ठीक अछि. कवच ऊपर क्वेश्चन आसीबार हाईली चांसेस अछि तो स्लाइटली सेटा को देखिबे. Which of the following are impacts of the PM Gati Shakti initiative as highlighted in recent findings? PM Gati Shakti initiative रो impact कोन आपण कहिबे? PM Gati Shakti रो impact कोन आपण कहिबे? First देखंतु expedited implementation of processes across projects. Number 1. Number 2, decreased logistic cost, increase in air travel subsidies. या भितरु आंसर कोटा होबो? PM Gati Shakti initiative रो recent findings कोन? PM Gati Shakti कोन? Infrastructure. मेजर होची इंफ्रास्ट्रक्चर एवं से मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर जदि आपण देखिबे तबे आपण को आपण स्लाइटली एटा को लॉजिक यूज करंतु. ट्रैवल सब्सिडीज सरकार के भी चिंता करिवो कि ट्रैवल सब्सिडीज एयर ट्रैवल रे पुनी ऑब्वियसली नॉट. तो थर्ड को आपण तो इजीली एलिमिनेट करि पारिबे. तो 1 and 2 ओनली 2 ओनली 1 ओनली रहला. फर्स्ट, एक्सपेडाइटेड इंप्लीमेंटेशन प्रोसेस अक्रॉस प्रोजेक्ट्स. ऑब्वियसली जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स गुडी को अछि ताको एक्सपेडाइट करिवा. तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट. डिक्रीज लॉजिस्टिक कॉस्ट. जेते लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होबो सेते बेटर फॉर द industry, better for the economy. Obviously second statement is also correct. A 1 and 2 only. A 1 and 2 only. Next question ko jiba. Which organization uses a digital master planning tool in a dynamic geographic information system या GIS, geographic information system platform as part of the PM Gati Shakti initiative? Please answer. GIS information system, digital master planning tool. आंसर कौन हो? आंसर होची आपनकर आंसर की जानि छिन कोहंतु आंसर. आंसर होची आपनकर A, that is 1 only, BSAG N.
पर्टिकुलरली बीसैग एन होची आपनकर भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स ठीक अछि बीसैग एन करिकी सेटा आंसर होची वन ओनली बीसैग एन मन रखथिबे भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स नेक्स्ट इसरो क्रॉस चेक करंतु एटा को क्रॉस चेक करंतु जीता एंड प्रभात एटा को क्रॉस चेक करिके देखंतु बीसैग एन या इसरो जदि एनएचआई तो नाही इसरो या भीतर यदि डाउट अछि आपण क्रॉस चेक करि नियंतु डेफिनेटली क्रॉस चेक करंतु टू मेक श्योर कि आंसर कोन बीसैग एन या इसरो एटा को क्रॉस चेक करंतु ठीक अछि नेक्स्ट देखिबा which of the following statements is correct regarding the logistic easy across different states leads report 2023 answer karibe leads rank states and UTs based on efficiency of their logistic ecosystem leads kon logistic easy across different states तेणु एठी कहा विषय डिस्कस करा होची लॉजिस्टिक्स या ट्रांसपोर्टेशन तेबे तार मेन ऑब्जेक्टिव कोन देखिबा लीड्स रैंक स्टेट्स एंड यूटीज बेस्ड ऑन द एफिशिएंसी ऑफ देयर लॉजिस्टिक्स एटा होची फर्स्ट स्टेटमेंट से कहूची सेकंड स्टेटमेंट से कहूची इट वाज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन 2018 इंडिया रैंक्स 38th आउट ऑफ 139 कंट्रीज इन द लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 ठीक अछि या आंसर करंतु एटा कि 2023 लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स रे इंडिया रो रैंकिंग केते थिला इंडिया रो रैंकिंग केते थिला इंडिया रो रैंकिंग थिला सिंपली मन रखतंदु एटा 38th आउट ऑफ 139 इन 2023 एटा को मन रखथिबे फर्स्ट आंसर सेकंड होची लीड्स रैंक स्टेट्स एंड यूटी बेस्ड ऑन द एफिशिएंसी ऑफ लॉजिस्टिक इकोसिस्टम ठीक अछि लॉजिस्टिक इकोसिस्टम 1 एंड 3 आंसर होची 1 एंड 3 स्टेटमेंट होची करेक्ट ता माने आंसर आपनकर सी होची करेक्ट सी होची आपनकर करेक्ट एटा ठीक अछि एवं से जो सेकंड स्टेटमेंट अछि से कहूची इट वाज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट जनरली एटा होची मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मन रखती बेटा को मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ठीक अछि नेक्स्ट आंसर होची 1 and 3 नेक्स्ट क्वेश्चन देखियो व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द मॉडिफाइड सेमीकॉम इंडिया प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम आंसर करिवे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द मॉडिफाइड सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम मॉडिफाइड सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय मेइती यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यार मेन पर्पस कौन फर्स्ट स्टेटमेंट देखो आपण फर्स्ट स्टेटमेंट टू एनहांस इंडियाज पोजीशन इन द ग्लोबल सेमीकंडक्टर मार्केट टू प्रोवाइड अट्रैक्टिव इंसेंटिव सपोर्ट टू कंपनीज कंसोर्टिया इन सेमीकंडक्टर रिलेटेड फील्ड्स प्रमोट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ट्रेडिशनल इलेक्ट्रॉनिक्स इन इंडिया तो वर्तमान इंडिया रो मेन पर्पस कौन कि इंडिया रे जेमती अधिका कौन ही परिवो सेमीकंडक्टर कंपनीज आमे केमती सेटअप करिवा सेल्फ रिलायंस पाई तो सेति पाई आंसर होची आपनकर कोन B2 ओनली टू प्रोवाइड अट्रैक्टिव इंसेंटिव सपोर्ट टू कंपनीज कंसोर्टिया सेमीकंडक्टर रिलेटेड फील्ड्स आपण रिसेंटली देखिथिबे ओडिसा रे प्रथम जो कंपनी सेटअप करा जाउची सेमीकंडक्टर पाई सेटा को मन रखथिबे
Next, what recent amendment has been made to the ACZ rules by the Ministry of Commerce and Industry? ACZ Special Economic Zones rules कौन change ହେଇଛି recently जदि हमें देखिबा first होची introduction of a new tax concession for ACZ. Next, demarcation of non-processing areas of IT, ITS, ACZs increasing in the processing area to 70%. एटा गोटे क्वेश्चन चांसेस अच्छी आसीबार एसीजेड आमे आगुरु भी डिस्कस करिचे गोटे अमेंडमेंट रूल्स आसीथिला 2023 रे पर्टिकुलरली से 2023 रूल अनुसार कहा जाउची कि डेमार्केशन ऑफ नॉन प्रोसेसिंग एरियाज इन आईटी आईटीएस स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स ये नॉन प्रोसेसिंग एरिया होची कोन बहुत जगह रे आपण देखिबे ऑफिसेस गुडी को सेमाने नहीं थिबे कंपनीज गुडी को किछि जगह रे सेमानकर जो मेन कोर फंक्शनिंग सेटअप थिबो जोटे एम्प्लॉइज थिबे काम करथुबे सब जिंस आउ किछि एरिया थिबो जोटा को सेमाने फॉर द यूटिलिटी पर्पस यूज करूथबे तो सेटा को नॉन प्रोसेसिंग बोली कहा जाए तो सेति पई ई जो पर्टिकुलर जो नॉन प्रोसेसिंग या यूटिलिटी पई भी सेमाने कोन करछंती एसीजेड रे यूज करूछंती सो दैट एठी भी जो सब्सिडीज मिलुची ए जगह रे भी सब्सिडीज मिलुची सरकार को कहबा कथा भाई ये प्रोसेसिंग पई आपण जागा नउछंती ठीक अछि यू आर गेटिंग सब्सिडीज बट व्हाई फॉर दिस आल्सो यू विल बी गिवन सब्सिडीज तो एटा को डेमार्केट करो कि तमरो यूटिलिटी एरिया पई तमे केते यूज करछो या नॉन प्रोसेसिंग पई केते यूज करछो ता ऊपर नॉर्मल टैक्स गुडी को इंपोज करा जो काहे कि ना बहुत गुडे कंपनी अछि अननेसेसरी से कोन करछन जागा माडी की बसछंती पुन जति कि जो माने जेन्युइन कंपनी अछि तांको पई जागा मिलु नाही ठीक अछि से टाइप रो एटा को अमेंडमेंट आना जायथिला तो आंसर होउची 2 ओनली ठीक अछि नेक्स्ट व्हाट डज द टर्म नॉन प्रोसेसिंग एरिया इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एसीजेड नॉन प्रोसेसिंग एरिया जोटा को मु यूटिलिटी एरिया आपन को कहउतली यूटिलिटी एरिया ठीक अछि देखिबा एरिया designated for manufacturing of goods, areas supporting infrastructure and services, areas that quality of tax exemption. तो आंसर होउची एरिया सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज ताकि जो कोर एरिया अछि ताहार सपोर्टिंग एरिया भाबरे से माने यूज करंती जोटा कि यूटिलिटी एरिया बोली हमें कहि परिबा ठीक अछि इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विसेज को सपोर्ट करिबा पई सो आंसर होउची बी 2 ओनली ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा Which of the following statements about offshore areas minerals development and regulation amendment act 2023 is correct? Which of the following statements about offshore areas mineral amendment act 2023 is correct? Offshore areas mineral statement पढ़िबा हमें the act amends offshore areas mineral development and regulation 2002. It provides for the regulation of mineral resources in the exclusive economic zone of India. Offshore mining is conducted at depth of less than 200 meters. तो particularly देखंतु ये जो offshore area से कहूची offshore area होची जोटा आपण जानि थिबे 1200 जो 200 जो nautical miles आपणकर अछि exclusive economic जोन बोली जोटा को कहा जाए जमते इटा होची सपोज आपणकर इंडिया रा मैप लेट से तो एटा रहिला आपनकर कोस्टल एरिया तो ए पर्यंत कोस्ट हे गला तापर जो 200 नॉटिकल माइल्स अछि सेटा होची इंडियन टेरिटरी रो पार्ट तो से जगह रे जदी किछि माइनिंग एक्टिविटीज होउची ऑब्वियसली दैट कम्स अंडर द इंडियाज जुरिसडिक्शन तनु से जो पर्टिकुलर एरिया रे जो माइनिंग हबो ता पई ये किछि अमेंडमेंट एक्ट आना जाईची 2023 रे नंबर 1 नंबर 2 होची The Act amends Offshore Areas Mineral Development Regulation Act 2002. तो पूर्वरु जो लॉ थिला सेटा कोन 2002 रो अमेंडमेंट केबे करा गला 2023 हिसाब रे सेकंड it provides for the regulation of mineral resources in the exclusive economic zone of India. So 200 nautical miles होची आपनकर एसी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन हिसाब रे यूज करा जाए तो से जगह जो मिनरल रिसोर्सेस गुडी को अछि ताकू रेगुलेट करबा पई ये अमेंडमेंट एक्ट को आना जाइतला प्योरली करंट अफेयर्स से गुडी को एनर्जी सेक्टर हो इंफ्रास्ट्रक्चर हो जोडे के हमें आज डिस्कस करू छे तनु स्लाइटली केयरफुल रहबे आपण 1 and 2 ओनली नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ नेशनल जियोसाइंस डेटा रिपोजिटरी पोर्टल
नेशनल जियोसाइंस डेटा रिपोजिटरी पोर्टल आंसर करंतु National Geoscience Data Repository Portal to provide geological and mineral exploration data. Geological and mineral exploration data. Second, to accelerate mineral exploration activities through enhanced private sector. To manage offshore mineral resources under the Ministry of Mines. Answer कौन कौन? देखो से कहूँ नेशनल जियोसाइंस डेटा रिपोजिटरी इट इज कहूँ टू मैनेज ऑफशोर मिनरल रिसोर्सेस ऑफशोर मिनरल रिसोर्सेस अच्छी ये हूँ जियो साइंस डेटा विषय कहूँ तो ऑब्वियसली ये सब्जेक्ट आउ ये स्टेटमेंट ये कॉन्ट्राडिक्ट करुच्ची टू एक्सेलरेट मिनरल एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज थ्रू एनहांस्ड प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन को आपण को एनहांस करा जाउची कोन पई ना mineral exploration पाई more and more companies can participate. Second होची geological mineral exploration पाई एटा को public domain रो data पाई consider करा जाउची तो सेहित पे आपण देखिबे 1 and 2 statement होची आपण एठी correct 1 and 2 statement होची correct एवं third statement होची incorrect ठीक अछि offshore mineral resources एटा just आमे discuss करथले exclusive economic zone under रे Which international initiative in India as a part of aims to enhance the reliance of supply chain for critical minerals? Critical minerals कौन? Critical minerals होची जोड़ा अपन करो जोड़ा rare earth materials बोले जामे जोड़ के कहूचे या कि जदि अपन कहिबे जो न्यूक्लियर पाई जो न्यूक्लियर जो पावर प्लांट अच्छी सेठी यूज करिया ପାଇଁ जो रॉ मटेरियल गुडी को ताको हमें critical mineral बोली कहूचे ठीक अछि Which international initiative in India as a part of that aims to enhance the resilience of supply chains for critical minerals? Resilience. देखिबा को initiative गुडी को अछि first देखो तो Australia critical minerals second होची mineral security partnership third होची supply chain resilience fourth होची Indo-Pacific minerals collaboration. Answer कोन answer होची आपनकर mineral security partnership and second होची supply chain resilience initiative ठीक अछि ई करंट अफेयर्स गुडी को आपण पढि नथिबे मु जहा आशा करूची तो सेहित पई क्वेश्चन गुडी कोना जाईची स्लाइटली आपनकर नजर रे रहिबो जेमति क्वेश्चन गुडी को कारण ई करंट अफेयर्स डेफिनेटली आपण पढि नथिबे आंसर होची कोन 2 and 3 बी होची आंसर ठीक अछि नेक्स्ट Which of the following statements true regarding the classification of the rare earth materials mentioned in the report? Rare earth materials just मु आपन को कहउतली एबे जो गुडी को जो चिप्स गुडी को चिप गुडी को जो अछि माइक्रोचिप या जो इलेक्ट्रॉनिक चिप गुडी को जेमति सेमीकंडक्टर जोडा हम कहउचे rare earth elements are divided into light rare earth elements and heavy rare earth elements number 1 number 2 there are 15 lanthanides among the rare earth elements. Scandium and yttrium are not classified as rare earth elements. Rare earth elements are critical for modern technologies. Answer karantu. Rare earth elements are critical for modern technologies. China पाखरे rare earth resources अधिका थिबारु semiconductor manufacturing रो आज hub हेकी से बसी छी. Like every country is depending on the China only for this reason. Naturally ता पाखरे rare earth material काफी high अछि. First जिंस. Second होची कोन? There are 15 lanthanides among rare earth elements. Yes, of course, 15 lanthanides among rare earth elements, and rare earth elements are divided into light and heavy. So answer होची कोन? 1, 2 and 4 only. ठीक अछि 1, 2 and 4 only. Next देखिबा. Next होची गोटे institution उपरे. Which of the following statements about the Indian Council of Agricultural Research are correct? ICAR. Indian Council of Agricultural Research are correct. First देखो is an autonomous organization under the Ministry of Agriculture. ICAR was established in 1929 as the Imperial Council of Agricultural Research. ICAR is responsible for coordinating research, education in agriculture, horticulture, fisheries and animal sciences. Please answer. तीनोटी जाक स्टेटमेंट होची आपनकर करेक्ट तीनोटी जाक स्टेटमेंट काहेकि लाइक तो ऑटोनोमस
organization Ministry of Agriculture and Farmers Welfare 1920 रे as Imperial Council of Agriculture Research establish करा जाइतला British मानक द्वारा. ICAR is responsible coordinating research and education in agriculture, horticulture, fisheries and animal sciences. Obviously third statement is also correct. ठीक अछि. Next question, interesting one. Significance of Svalbard Global Seed Vault in relation to ICAR. Svalbard. Answer karandu. Svalbard Global Seed Vault. First, it is a safety duplicate storage for seeds deposited by ICAR. It is the largest gene bank in the world. Has partnered in the global genome sequencing of various crops. Obviously, largest term itself is very kind of extreme statement. Obviously, largest gene bank नुहे. Gene bank गोटे जोटा जो seeds गुडी को आमे करूचु कोन जो बर्तन high yield variety seeds गुडी को आमे चेष्टा करूचु ताकू develop करिवा पई Svalbard Global Seed Vault को use करके ICAR माध्यम रे, but it's not the largest one and partnered in the global genome sequencing of various crops. So 1 and 3 statement are correct. So answer is C. D is the second statement is incorrect one. Next question. Under which ministry will the National Turmeric Board operate? Under which ministry the National Turmeric Board operate? Answer karibe. Easy question. National Turmeric Board operate. National Board Turmeric operate. Answer होची कौन? Answer होची B, 2 only. Ministry of Commerce. Ministry of Commerce मन रखते बेटा को, कारण बहुत चांसेस अच्छे हम तो एग्रीकल्चर बोले आंसर करी परिबा, तो एटा होची Ministry of Commerce. Next. Under which act was the Bharatiya Beej Sahakari Samiti Limited established? को एक्ट माध्यम रे जो भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड was established. Answer. सहकारी समिति टर्म यूज हेची तो सेति पई ताकु टिके चेष्टा करिवे बुझिया पई. सहकारी समिति कोन? कमिटी को समिति हमें कहबा, समिति कमिटी कोठु आसे? कोऑपरेटिव सोसाइटीज. मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 2002. मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 2002. आंसर होची 1 ओनली. ठीक अछि. नेक्स्ट. Which of the following statement is true regarding the India's phosphorus import and production? आपण जानिथिबे phosphorus import रे phosphorus India import करे. इनफैक्ट आपण देखिबे ईरान ये सब जगह रू phosphorus हमें import करू, इजराइल रू भी हमें phosphorus import करू. आंसर कर दो. Which of the following statement is true regarding the India's phosphorus import and production? India is the world's largest importer of phosphorus. First statement से कहूची India is the largest importer of phosphorus. Second, phosphate rocks are primarily produced in Rajasthan and Madhya Pradesh. India's import phosphorus mainly from Europe. जस्ट एबे इंपोर्ट विषय कहूली आपन को. इंपोर्ट आमे कोट करू इन द इजराइल मु आपन कहली, ईरान भी कहली, तो ऑब्वियसली यूरोप नु है. तो थर्ड स्टेटमेंट को आपन इजीली एठी एलिमिनेट करि परिबे. फर्स्ट होची लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ फॉस्फोरस, दैट इज ट्रू. एंड अगेन फॉस्फेट रॉक्स कोठी आपन को देखिबा को मिलिबो अधिका मध्य प्रदेश एवं राजस्थान रे. आंसर होची 1 and 2 ओनली. आंसर होची ए 1 and 2 ओनली. नेक्स्ट देखिबा. India recently appealed against a ruling by the WTO dispute settlement body concerning its compliance with the Information Technology Agreement ITA. ITA, Information Technology Agreement. What was the specific commitment that India was found to have violated? तो बर्तमान जो रिसेंटली इंडिया ITA को नहीं की WTO जाइथिला, WTO रे कंप्लेन करिथिला कोथि पई कि कोन प्रॉब्लम थिला जोटा कि वायोलेट करा गला. ITA
आंसर करेंगे WTO रो मेन पर्पस कौन ट्रेड रूल को जोठी वायोलेट हला सेठी WTO को आपण जाकी कंप्लेन करि परिबे राइट से इंडिया भी जदि करिवो वायोलेट डिफरेंटली अलगा जो कंट्रीज माने से माने भी डेफिनेटली कंप्लेन करिवे तो इंडिया जो कंप्लेंट आनी ची कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जनरली जोटा का सॉफ्टवेयर आपण कहि परिबे सॉफ्टवेयर जतबे हम एक्सपोर्ट करूचे तापर डेफिनेटली किछि गोटे से माने रेस्ट्रिक्शन लगै थिबे सेति पय तो ऑब्वियसली इंडिया कंप्लेन कला तो आईटी अच्छी माने एग्रीकल्चरल सब्सिडीज केबे भी नथिवो तो एटा को एलिमिनेट फर्स्ट कर दियंदो आपण ट्रेड इन सर्विसेज कमिटमेंट जीरो टैरिफ कमिटमेंट सो जीरो टैरिफ कमिटमेंट बोली एटा होचे आंसर वन ओनली ए इज द करेक्ट आंसर ठीक अछि नेक्स्ट देखिबा which of the following statements is true regarding current functioning of the WTO's appellate body current functioning of the WTO's appellate body ठीक अछि देखिबा कोन that is fully functional and resolving disputes its functioning is impacted due to the US blocking appointments it has been reformed to ensure swift resolution of disputes answer कोन WTO's appellate body एटा न्यूज काफी दिनरु एटा न्यूज रे अछि काफी पुराना न्यूज एटा WTO रो जो appellate body जेहेतु US आपण देखिबे WHO US WHO UN वर्ल्ड बैंक IMF WTO सबुठी US रो जेहेतु अधिका से फंडिंग करे डेफिनेटली तार से यानी कि तार वॉइस इज काफी अधिका अछि को ए जो प्लेटफॉर्म गुडारे सो ऑब्वियसली इट्स फंक्शनिंग इज इंपैक्टेड ड्यू टू द US ब्लॉकिंग अपॉइंटमेंट जो हायर अथॉरिटी रे अपीलेट बॉडी जो गुडी अछि से तार जे डीजी डायरेक्टर जनरल आपण जानथिबे तो सेठी ब्लॉकिंग जेहेतु करूची तेणु से प्रॉब्लम फंक्शनिंग स्मूथ फंक्शनिंग रे प्रॉब्लम होची ब्लॉकिंग एथि पय करूची कि जोटा कि जो कैंडिडेट को चाहूची US से कैंडिडेट को मिलुनी सपोर्ट that is the reason according to the recent development what aspect do India's recently signed FTAs like Australia and India address for free trade agreement eta आपण simply कहि परिबे free trade agreement according to recent development what aspect do India's recently signed FTAs like Australia India address answer करिबे easy question eta multiple times हम डिस्कस करी चेटो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होची कोन जनरली जोटा कि टैरिफ को कम करबा टैरिफ को न्यूट्रलाइज करबा यानी कि जीरो करबा तो पर्टिकुलरली जो रिसेंट जो आपण जानि थिबे ऑस्ट्रेलिया इंडिया जो पर्टिकुलर केस रे जो नॉन वर्तमान टैरिफ बैरियर्स को माने इंपोज करू नाहंती maximum countries they are not imposing tariff barriers they are imposing what non tariff barriers hela apna easily you can drag to that country to the WTO suppose apna price upre hi tax lagai dele 10% ro apna easily taku WTO forum re देखि परे देखो हमर प्राइस थिला 100 टंका से माने 10 रुपीस लगे देले टैरिफ वर्तमान नॉन टैरिफ बैरियर होची नॉन टैरिफ बैरियर गुडी को कोन जेमति कोटा हमें उटे डिस्कस करथिले क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन सेमती आउट देखिबे पैकेजिंग आपण देखिबे कोन ना आपण को स्टैंडर्ड से माने देबे कि ई स्टैंडर्ड पैकेजिंग हेले ही आपण जाई कि एक्सपोर्ट करि परिबे व्हेन यू हैव टू मेंटेन दैट पैकेजिंग you will find that packaging ro cost या packaging रो prices is more than the cost of the product माने कर 5 टंका आपण खर्च करी कि प्रोड्यूस करथिबे पैकेजिंग रे 7 टंका खर्च होई सरीबणी so in that case price will definitely go high and demand obviously तो केही परचेस करि परिबे नै सेकंड आपण देखिबे सेफ्टी स्टैंडर्ड जेमती आपनकर मने थिबो अल्फांसो मैंगो which is something जोटे कि सबटू सोफिस्टिकेटेड आपण तळे हेइ जिवो सिलेक्शन हेइ जिवो आपण तळे देखिबे आपण को अल्फांसो मैंगो गिफ्ट आसीबो से अल्फांसो मैंगो को इंडिया इंपोर्ट करे यूरोप राइट अल्फांसो मैंगो रे यूरोप कोन कहूची कि अल्फांसो मैंगो रे as per the European standard ठू अधिका पेस्टिसाइड्स यूज करा जाय छै तो ये भी गोटे प्रकार रेस्ट्रिक्शन तेणु नॉन टैरिफ बैरियर होची विदाउट चेंजिंग द प्राइस दे आर पुटिंग रेस्ट्रिक्शंस लाइक कोटा हो जेमती पैकेजिंग मु आपन कहली जेमती
पेस्टिसाइड्स सेफ्टी स्टैंडर्ड को देखिकी तेणु आंसर होची 2 ओनली बी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट which of the following countries is not one of the nation with which India signed free trade agreement free trade agreement को country सहित हमें sign करी ना है नेपाल सिंगापुर साउथ कोरिया ब्राजिल आंसर होची कोन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जेमते म आपन कहितली देखो तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होची तार लंबा प्रोसेस अच्छी से लंबा प्रोसेस रे मु जाउनी अर्ली हार्वेस्ट अच्छी आज लास्ट वीडियोज रे गोटे कमेंट के करथिले फ्री ट्रेड एग्रीमेंट माने जीरो टैरिफ डेफिनेटली जीरो टैरिफ माने सिंपल जिंस होची कोन मु आपन कहि दिए सेटा को बोधे कंफ्यूजन माने मोर डिलीवरी रे कंफ्यूजन थला कि से बुझिबा भूल कले बट लेट मी एक्सप्लेन इट देखो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जेतेबेले हुए सपोज इंडिया एंड यूएस लेट्स से इंडिया यूएस भितर टोटल एतिकी गुड्स एक्सपोर्ट इंपोर्ट होची सपोज एठी भी किछि गुड्स अछि एठी भी किछि गुड्स अछि किछि गुड्स रे से माने कोन कले टैरिफ को रिड्यूस कले या कम कले they have reduced the tariff rate and in some goods they have maintained a zero tariff तो जेतेबेले फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होची सेतेबेले आपण देखिबे किछि लिस्ट ऑफ गुड्स आपण को फाइंड आउट करिवार अछि जोटी की टैरिफ को आपण को जीरो पर्यंत आनिबे यू हैव टू कम डाउन दैट टैरिफ टू जीरो सेटा होची प्रिंसिपल माने रूल्स या जोटा की तारो इंडिया माने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट रो सेटा होची नियम तो ऑब्वियसली दिस एस्पेक्ट एठी जो गुड्स गुड रहला जीरो टैरिफ बुझियो जिनसटा तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ देयर आर सम गुड्स वेयर मिनिमम टैरिफ देयर आर सम गुड्स देयर विल बी नो टैरिफ और जीरो टैरिफ ठीक अछि तो एठी ब्राजिल होची आंसर ब्राजिल सहित कोनोसी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया रो साइन हेई नाही ब्राजिल सहित कोनोसी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हेई नाही नेक्स्ट what does currency valuation primarily refer to what does the currency valuation primarily refer to the process of determining the relative worth of one currency in terms of another valuation currency valuation हमें multiple times एटा को discuss करिचे जो exchange rate currency valuation second the act of converting currencies based on fixed rate the legal framework governing international trade answer होची कोन relative worth value decide करियो ना what is the worth of that currency of one currency in terms of another simple होची exchange rate जोटा currency exchange rate जोटा हमें कहूचे आंसर होची A1 ओनली बाकी दिटा नुहे वर्तमान 84 क्रॉस करि सारलानी 85 86 भी ही जीव जल्दी बहुत जल्दी which of the following is not a method of exchange rate determination not a method multiple times discuss करिचे हमें not a method easy question जल्दी fixed exchange rate China USSR flexible market economy exchange rate US let's say man is floating India and relative exchange rate बोली किसी concept नहीं D4 only ठीक है next which of the following features were recently approved by the Security Exchange Board of India for the Social Stock Exchange which of the following features were recently approved by the Security Exchange Board of India for the Social Stock Exchange SEBI द्वारा recently approved by the Security Exchange Board of India for the Social Stock Exchange. Social Stock Exchange पाई कोटा को recently SEBI द्वारा approve करा जाइथिला ठीक अछि Social Stock Exchange पाई SEBI द्वारा कोटा approve करा जाइथिला आंसर के करि परिबे recent एटा current affairs रो नो इशू स्वागत है issuance of zero coupon zero principal bond
Issuance of equities, debt instrument, issuance of convertible debenture. Answer होउची कोन? Answer होउची issuance of zero coupon, zero principal bond. First, second होउची equities and debt instrument for profit enterprises. दुईटी statement होउची correct. Issuance of zero coupon, zero principal bond, and insurance of equities and debt instrument for profit enterprises. ठीक अछि. Next देखिबो. What is the primary objective of issuing zero coupon, zero principal bond for the social stock exchange framework? Zero coupon, zero principal bond रो main purpose कौन? आंसर करिवे. देखो जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल तार माने होची कोन? To encourage donations through mutual funds for non-profit organizations, to promote welfare and provide tax benefits. देखो जीरो कूपन बॉन्ड आमे डिस्कस करथिले. जीरो कूपन माने इंटरेस्ट आपन किछि मिलिबो नाही. एठी जीरो प्रिंसिपल भी अछि. ता माने आपन जोटा परचेस करिवे ना ता ऊपर किछि प्रिंसिपल आपन को या ताको आपन को मनी बैक केबे मिलिबो ना आपन को किछि इंटरेस्ट मिलिबो. तो एटा कोन चैरिटी डोनेशन पाई एवं सेही डोनेशन चैरिटी फल रे आपन को किछि टैक्स बेनिफिट सरकार को तरफ रे मिलिबो. बुझियो जिनसटा मन रखथिबे सेटा को. टू एनकरेज डोनेशंस थ्रू म्यूचुअल फंड्स फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस. नॉन प्रॉफिट या एनजीओस गुडी को अछंती या कॉर्पोरेट्स भी सपोज इन्वेस्ट करि परिबे फॉर द सोशल स्टॉक एक्सचेंज. यानी कि सोशल सेक्टर रे से पैसा को या से अमाउंट को इन्वेस्ट करा जिवो या स्पेंड करा जिवो. टू प्रमोट वेलफेयर एंड प्रोवाइड टैक्स बेनिफिट्स. ठीक अछि. आंसर होउची 213 बी. जीरो कूपन एंड जीरो प्रिंसिपल एटा को मन रखथिबे. प्रिंसिपल जदि मिलिबो नाही माने कोन? ऑब्वियसली आपण चैरिटी करूछन डोनेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा. What is the main reason for the Reserve Bank of India advisory to banks regarding LIBOR? What is LIBOR? LIBOR माने कौन? आंसर किए करि परिबे. LIBOR होची लंडन इंटरबैंक ऑपरेशनल रेट. राइट. लंडन इंटरबैंक ऑपरेशनल रेट होची एंती मीबर भी अछि. मुंबई इंटरबैंक ऑपरेशनल रेट सेमती LIBOR. इंटरनेशनल मार्केट रे डिफरेंट बैंक्स गुडी को निज निज भितरे लेंडिंग बोरोइंग करि थांती. राइट. तो सेत पई सेटा को जाउछि जोटा इंटर बैंक ऑपरेशनल रेट सेटा मुंबई रे हेले मुंबई इंटर बैंक ऑपरेशनल रेट लंडन रे हेले सेटा को हम LIBOR यानी कि लंडन इंटर बैंक ऑपरेशनल रेट बोली कहू. ठीक अछि. तो यार मेन पर्पस गुडी को कोन देखिबा. टू एनकरेज बैंक्स टू इंक्रीज लेंडिंग रेट, to ensure a complete transition away from LIBOR due to manipulation, to promote the use of foreign currencies domestic transactions. Simple jinso hochi main reason of RBI advisory to banks regarding LIBOR. Kon advisory thila to ensure a complete transition away from LIBOR due to its manipulation. सरकार चाहुचंदी कि LIBOR रो हेल्प आपण नियंतु नाही कारण that is not fair enough. That is unfair. They are manipulating. ठीक अछि. आंसर होची आपनकर बी जोटा कि 2 ओनली. नेक्स्ट. Which of the following types of banks are required to maintain the cash reserve ratio as per the RBI Act 1934? RBI Act 1934 अनुसार को प्रकार रो बैंक को CRR यानी कि कैश रिजर्व रेशियो को मेंटेन करबा को पड़े. कैश रिजर्व रेशियो को मेंटेन करबा को पड़े. ठीक अछि. फर्स्ट देखंतु शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक. नेक्स्ट होची रीजनल रूरल बैंक. नेक्स्ट होची कोऑपरेटिव बैंक्स. शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक देखंतु रीजनल जो आरआरबी गुडी को अछि ग्रामीण बैंक जोडी को कहूचे. कोऑपरेटिव बैंक जोडी को अर्बन कोऑपरेटिव बैंक या प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज समस्तों को सीआरआर मेंटेन करबा को पड़े कैश रिजर्व रेशियो. सो आंसर होची सी 1213. आंसर होची सी 1213. ठीक अछि. आंसर होची सी. मन रखते बेटा. तो आज पे एतिकी. दैट्स इट फ्रॉम माय साइड. एंड अपना एप्लीकेशन को डाउनलोड करि परिबे. करंट अफेयर्स, डेली क्विज, मैगजीन, notes, article, job alert, subject wise quizzes, power capsule, videos
एंड थैंक्स फॉर वाचिंग लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब ठीक अच्छे कमेंट सेक्शन में कहे कौन आहरी आम इम्प्रूव करिपरिबा जोठी भी जदि आंसर आपन को डिफर लागुची कारण लास्ट टाइम गोटे आंसर डिफर हेतिला मु आपन कहि दिए जो होलसेल प्राइस इंडेक्स को नहीं हेतिला सेटा हेडलाइन इन्फ्लेशन करेक्ट माने पड़ला हेडलाइन इन्फ्लेशन आई चेक्ड इट सेटा होची आंसर होची आपनकर सीपीआई डब्ल्यूपीआई नुहे सीपीआई तो डब्ल्यूपीआई कहितली सेटा सीपीआई जोटी आंसर आपन को डिफर लागुची यू कैन कमेंट आपन कमेंट सेक्शन में कहबे सो दैट नेक्स्ट टाइम जतल मु भी I will come to the class. I will definitely highlight that. तेणु जोठी आंसर डिफर लगे आपने इजिली यू कैन कमेंट ठीक अच्छे सो वी शुड हैव एमती नुहे कि मुझे जहाँ ये बोर्ड रे कहीदेली दैट इज करेक्ट नहीं आंसर ठीक हवा दरकार दैट इज आवर मेन मोटो ठीक अच्छे कमेंट करें सो थैंक्स फॉर वाचिंग सी यू इन द नेक्स्ट क्लास टाइम बहुत अच्छे आम पाखे भल से रिवाइज करूँ पढ़ु एंड डेफिनेटली क्रैक करेंगे एवं मार्क्स देखिए तो आहरी मोटिवेशन आपको मिलती राइट ठीक अच्छे नेक्स्ट टाइम देखा थैंक यू।